हेलो, मैं शुभ्रा और आप देख रहे हैं द कैमरा स्टोरी। और अभी मैं हूँ गुड़गांव में। और अगर आपको फ़ोटो और वीडियो शूट करने में इंटरेस्ट है ना, तो आज का वीडियो कहीं भी स्किप मत करना। वैसे तो ये व्लॉग है, मगर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट शूट आज के इस व्लॉग में ऐड होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। कैमरे के अंदर फीचर्स ये शटर एपर्चर है, अगर ये यहाँ पकड़ूंगा ये if I'm using a bigger lens, but this is right. Now I will use my body for stabilization. This is the biggest stabilizer that you have. First thing first, मेरा posture देखिए. I'm leaning onto one leg, but there's a second leg that I can lean onto. Right? अगर मैं सीधा खड़ा होऊंगा, now I have a tendency of this happening. डिसबैलेंस। बास्केटबॉल में सीधा खड़ा होने से क्यों मना करते थे कि अगर आपको कोई धक्का देगा आप हिल जाओगे, आप गिर जाओगे। राइट शोल्डर पुश तो आता ही था उसके अंदर। तो हम लोग बास्केटबॉल में कैसे करते थे, एक पिवट बनाते थे, एक पैर आगे लेके जाते थे, प्रॉपर वी फॉर्म होता था पैर का, और आप अपने पूरे बॉडी का वेट दोनों पैरों पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जिसकी वजह से अगर आप बहुत विंडी सिचुएशंस में शूट कर रहे हैं, आपको बहुत देर तक खड़ा होना है, तो आप थकेंगे नहीं, प्लस ज्यादा हिलेंगे। You see how the camera is completely stable. There is literally no motion coming. Why? Because the structure, the centers of gravity that is coming from body is stabilizing it. हम लोग फूड शूट करना पसंद करते हैं, हम लोगों के पास कई बार ये स्लाइडर्स नहीं होते हैं, we have to create some motion in food. So what we have tried doing is look how I can lean. If I lean, I can create some amount of motion. If you use a zoom lens, that amount of motion will look much larger. Why? क्योंकि आप zoomed in हो, तो आप zoomed in में थोड़ा सा भी surface area capture करेंगे और बहुत ज़्यादा surface area capture करेंगे। इसमें आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाथ हिलेगा, आप पास भी जाओगे तो भी हिलने के पूरे चांसेस, because you're holding with your fingers. The surface area connected to your phone is very less. Increase your grip. So I'm supporting my knuckles. ठीक है, मेरा thumb free है। यहाँ रिकॉर्डिंग बटन नहीं पे होता है, मोड्स बटन नहीं पे होता है, उसके लिए मेरा थंब फ्री है। ठीक है, सेकंड कैमरा कैसे पकड़ा था, लेंस का वर्क नहीं कर रहा हूं मैं, और अब मेरे दोनों थंब्स फ्री हैं। मैंने ये लॉक बना दिया, इट्स कॉल्ड द एल लॉक। नाउ माय थंब इज फ्री, बट दिस स्टेबिलिटी, द होल्ड योर फोन लाइक दिस स्टेबिलिटी विल अलाउ मी टू डू मूवमेंट, एंड आई कैन डू इवन मोर मूवमेंट। इज आई कैन डू दिस, I can do this, right? I can walk with it if I walk slowly. अगर आपके फोन में inbuilt stabilization, that will add to it, right? But this grip is what will give you stability when you're shooting video. Inspiring your daughter to be a filmmaker, and everyone is asking you why. Yeah, these days, like everybody wants, to go for a regular profession, like be doctors, engineers, and I've come from that generation where, it was so much taboo for girls to go into, acting, even if when we had so much big actors acting in Bollywood and Hollywood, but all girls, they were like, nahi, अच्छे घर की लड़कियाँ इस लाइन में नहीं जाती, because it involves traveling. I get it that they were concerned for their safety, but I think it's high time we should let our daughters be what they want to be, instead of you just dictating every step of theirs कि ये मत करो, वो मत करो. Let them fly, let them discover who they are, what they want to do, and let them learn from their own mistakes. Heat source. Warm light क्या होगी? Candle is warm. Tungsten bulbs, your normal yellow bulbs are warm, they generate heat. So they are warmer light sources. So they are at, let's say, 3200 kelvins, 2400 kelvins. Candlelight is sometimes considered at 1600 kelvins also. वहीं पे you have cooler light sources. What is a cooler light source? Sun is still considered a cooler light source. It's daylight. It's at 5600 kelvins. Sunlight actually में yellow नहीं होती है.
उसका एक आवर होता है जिसने गोल्डन आवर जिसको हम कहते हैं, जब वो लाइट बहुत प्रोमिनेंटली वार्म हो जाती है एंड योर टोन्स चेंज। और जब आप इन गोल्डन आवर्स में शूट करते हैं या आप ऐसे किसी भी लाइटिंग सिचुएशन में शूट करते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल, योर स्किन टोन्स हैव टू लुक लाइक द वे दे आर। Right, to judge that, what we usually do is we get a white piece of paper. The white is not pure white, it's not the actual color जो हमारे human eyes को नजर आ रहा है। So what I do is I play with the kelvins. I am in a warm tone of lighting, right? Let's take it towards that. हुआ change? Yes. मैम नीचे करो। The skin tone is better. It's not too warm anymore. The color shirt, the shirt का जो color आपका blue आ गया वो वापस आ गया। पहले white भी yellow हो गया था। एक बार वापस ऊपर कीजिए। इसको करने का एक और तरीका है। नीचे। So your camera also has a ability to auto white balance it. So whenever you come into a situation where the light is changing or light, you know there is a different light source of what you were shooting before, always check what white balance your device is capturing. That is the first tone correction. अगर आप बहुत हाई, जैसे JPEG वर्सेस रॉ होता है, राइट? रॉ इमेजेस में आपके पास कैपेबिलिटी आ जाती है कि आप पोस्ट प्रोडक्शन में फोटोशॉप में खोल के व्हाइट बैलेंस चेंज कर सकते हैं। अगर आप JPEG खींचते हो तो वो आपके पास ऑप्शन नहीं आती, राइट? वीडियो भी सेम फॉर्मेट में शूट होता है, कलर बिट रेट्स पे शूट होता है, 8 बिट होता है जो आपके नॉर्मली फोन्स, कैमरास वगैरह सब कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है? द सेकंड इज 10 बिट। सो 8 बिट कैप्चर्स अप्रोक्सीमेटली 16 मिलियन कलर्स, 16 मिलियन कलर्स कैप्चर करते हैं। फिर आता है 10 बिट। अब 10 बिट ऑप्शन, योर आईफोन हैज अ 10 बिट वीडियो ऑप्शन, इट्स कॉल्ड द 10 बिट डॉल्बी एटमॉस मोड, जिसमें वो HDR वीडियो कैप्चर कर रहा है 10 बिट पे। आपके कुछ और फोन्स भी आ गए हैं, जो ये चीज सोनी लेके आ गए, सैमसंग लेके आ गए ये चीजें। देन कैमराज में देयर वेरी फ्यू नाउ व्हिच हैव ओनली टॉप लाइन कैमराज हैव इट, बट इन Lumix what I have felt is entry level cameras also have the GH series per se as a 10 bit. Even the entry level series, this is camera called the G9 also has a 10 bit. Is very brilliant for photo video both. अब क्या होता है कि आप जब एक नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बीट विद GoPro, बीट विद फोन, बीट विद एनीथिंग दैट यू आर रिकॉर्डिंग इन with, you're capturing 16 million colors. That is the information that the camera is capturing. So when editing you have that much information that you can play with. तो अगर आपने white balance खराब किया वो ठीक नहीं हो सकता, अगर आपने exposure बहुत ज़्यादा bright कर दिया वो ठीक नहीं हो सकता, अगर आपने बहुत अंधेरे में शूट कर दिया वो ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जैसे JPEG को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो इमेज खराब होती जाती है, वीडियो में बिल्कुल सेम चीज़ है, राइट? 8-bit वीडियो कैन नॉट बी कलर ग्रेडेड, इट कैन बी कलर करेक्टेड टू सम एक्सटेंट बट इट कांट बी ग्रेडेड। उसके लिए हमें हायर बिट रेट्स शूट करना जरूरी है, विच इज 10 बिट नाउ, विच इज 1 बिलियन कलर्स। 16 मिलियन, 1 बिलियन। इमेजिन द अमाउंट ऑफ मोर इंफॉर्मेशन दैट द कैमरा इज कैप्चरिंग। सो अब आपके पास ऑप्शन है कि अगर मेरे से व्हाइट बैलेंस गलत हो गया वीडियो में, मैं पोस्ट प्रोडक्शन में जाके उसको करेक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे से एक्सपोजर में जैसे इनका फेस डार्क हो गया, बैकग्राउंड ब्राइट हो गया, मैं उसको बहुत हद तक बैलेंस कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन मेरे कैमरे की क्या डायनामिक रेंज है। फोन में तो HDR मोड ऑन हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस कर देता है। कैमरा की डायनामिक रेंज किक ही नहीं तब करती है जब आप 10 बिट लॉग फुटेज शूट करते हैं। लॉग फुटेज इज लॉग, सुना है कभी आप लोगों ने? लॉग कलर प्रोफाइल, इट इज एक्चुअली ओनली अ कलर प्रोफाइल, इट्स नॉट रॉ वीडियो। मार्केट क्या बेच के बोल के बेचती है कि लॉग कलर प्रोफाइल इज रॉ, नहीं है, इट्स जस्ट अ कलर प्रोफाइल विच इज गिविंग यू डिटेल इन द शैडोज। आप रॉ पे कब जा रहे हो? जब आप बिट रेट बढ़ा रहे हो। 10 बिट इज ऑल्सो बाय द वे नॉट रॉ, इट्स ओनली ProRes, प्रोफेशनल रेजोल्यूशन, राइट? रॉ कब आता है? व्हेन यू गो टू 12 बिट एट अ मिनिमम विच इज क्लोज टू 64 बिलियन कलर्स। योर सिनेमा इज शॉट ऑन 12 बिट, योर एवेंजर्स एंड योर मार्वल्स आर शॉट एट 14 और 16 बिट। तभी तो वो जो दुनिया क्रिएट कर देते हैं उनके आसपास, और जो फर्क हमारा बाहुबली और उसमें आया या ब्रह्मास्त्र अगर किसी ने देखी है, आप मेक आउट कर सकते हो कि देयर इज सम अमाउंट ऑफ फेक देयर, इज ओनली बिकॉज दे आर नॉट प्लेइंग विद हाई बिट रेट्स, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज एक्सपेंसिव, राइट?
अभी ये इन्होंने 10 बिट तो सस्ती कर दी, 12 बिट अभी भी सस्ती नहीं है। 12 बिट S1H पे है ऑन एन Atmos रिकॉर्डर, इसमें भी है, सॉरी GH6 में भी। Cinema, if you're planning to get into really high quality renders later on, you need at least a 10 bit footage to shoot with. To an extent, Lumix ने इसमें से 8 बिट हटा ही दिया है, GH6 में 8 बिट है ही नहीं, आप मिनिमम 10 बिट से शूट करते हो और ऊपर जाते हो। Hence the file size are bigger and the cards are different. If you're recording 10 bit on the camera, it's a bigger card. It's a CF Express card. CF Express type. This is how the card looks. That's an XQD. No, this is a CF Express Type B. It's also called XQD. XQD को replace करके इन्होंने CF type Right? मेरा कलर बैलेंस हो गया, मेरे स्किन टोन्स आगे सब we are going towards 5600 केल्विन। Still warm to warm for me, तो इसका मतलब हमारा पीछे से कोई लाइट सोर्स आ रहा है तो वो वाली लाइट्स ऑफ करो। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे को इनका सिर्फ टॉप बॉडी को लाइट अप करना है तो मैं अपनी इंटेंसिटी कम करूंगा, अपने लाइट सोर्स को छोटा करूंगा, पास ले आऊंगा। मैं जितना पास लाइट सोर्स अपना लेके आऊंगा, जितना छोटा लाइट सोर्स क्रिएट करूंगा, मेरा उतना कम सरफेस एरिया कैप्चर होगा। तो जैसे आप मेकअप जब करते हो, यू डोंट नीड अ लार्ज लाइट सोर्स, यू यूज रिंग लाइट्स एंड यू पुट इट इन फ्रंट बिकॉज इट्स अ स्मॉलर लाइट सोर्स। बट रिंग लाइट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, पीछे जाती है, so your eyes move away from the background, so hence you need at least a 20-foot difference between the background and your subject when you're using a ring light. Always point your reflector towards the light source, because what we're actually doing is we're bouncing. This is called a bounce board. Shadow khatam ho rahi hai, rather than using a white board we use a black board, so jo uski shadow fall ho rahi hoti है, it's more prominent, it's more proper, but it has a small softness on the edges. It's not a sharp shadow. So if you want to create that kind of lighting where you are adding shadow to your thing, always use a negative bounce. Angled at a 45-degree angle and diffused. Diffused क्यों? क्योंकि अगर मैं ये हटा देता हूँ, इंटेंसिटी से ज़्यादा बैकग्राउंड देखो, ये ग्रिड है। ग्रिड क्या करती है, ग्रिड मेरे को अलाउ करती है कि मैं बैकग्राउंड पे जो मेरा फॉल ऑफ लाइट हो रहा है वो खत्म हो जाए। मेरे शैडो से पीछे कट भी हो गया, हाँ हाँ मैं समझ गया, या but at the same time this fall off here is defining the image. This is जुगाड़ है। हाँ हाँ यही काम करता है। ये जुगाड़ है और हम लोग नॉन जुगाड़ के लिए हैं। हाँ यही काम करता है। हम लोग इसको प्रोफेशनली करते हैं। But what if I have a budget? What if I can put a third light? Now a third light for me is maybe a 60,000 rupee light. For you when you're starting, it would be a torch. A torch that is diffused. कभी audience ring light को define नहीं करती है। As a human being, you have a tendency of reading what is the frame. ठीक है, as a filmmaker, I have a ability to put light from somewhere else. ठीक है, जब मैं उसको किसी और जगह से ऐड कर रहा हूँ, तो या तो मैं ये लाइट सोर्स यहाँ एस्टैब्लिश करता, तो उस केस में मेरी वो साइड डार्क ही रहती, राइट। मेरे को वो साइड पे लाइट अप करनी थी क्योंकि मेरे को बैकग्राउंड में डेप्थ क्रिएट करनी थी उनके पीछे, मैंने लाइट सोर्स इधर से दिया। So ये मेरा ऐड कर रहा है वैल्यू टू द बैकग्राउंड, वो ऐड कर रहा है द रिंग दैट इज क्रिएटेड ऑन माय सब्जेक्ट। I prefer doing like that. Light is at 5600 kelvins. It's as a daylight, right? This light here is at 3200 kelvins. It's a much warmer source of light. Why? Because I want a separator. It should look different. हम इसको interesting कर सकते हैं, हम यहाँ से RGB lights add कर सकते हैं, हम colors add कर सकते हैं. There is so much more that we can do. क्या लगाया है माउंट के? So जो आगे है, it's called a Fresnel. Okay. Fresnel कहते हैं इसको। Fresnel क्या होता है? Basically, it's a flood and a zoom thing. Okay. तो ये सेम लाइट को मैं फैला भी सकता हूँ और सेम लाइट को मैं कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। अभी ये जूम मोड में ये पर्टिकुलर लाइट में ये ऑटोमेटेड है। अच्छा। मतलब there is a Does projector light work through this? No. something very similar. Whenever you are working on projects, even in films, we use lavalier mics, lapels. ठीक है, lapel mic जिसको बोलते हैं उसका एक्चुअल नाम है lavalier mic. This is the receiver, and then we have two transmitters. Right, the transmitters themselves have a capability of giving you sound. They have a mic inbuilt.
So in reality, if I just hook it up, ये अपने collar, shirt has a working collar and a negative collar. Working collar क्या होता है कि basically आपकी जो shirt की opening होती है, जो आपकी shirt की opening है, that is a working collar. मतलब मैं कुछ भी hook up करूँगा, कोई mic hook up करूँगा, कुछ भी करूँगा, that is supposed to be there. One, the direction of the mic has to be noted. Right, these are omnidirectional mic. They record a diaphragm, but even if this is pointed away, it will record sound from a distance. What a lavalier mic now gives me is the ability to come much closer to my subject. This acts as a lavalier right now, but with this bigger format of transmitters, we have a problem. We can't put them in. With a smaller form of a mic, since that has an option of a Type-C insert, so we get lavaliers with a Type-C output also. What we have is a 3.5 mm jack. This I can hide inside anybody's clothes. Right, you can use a double-sided tape, you can stick it. Always use a double-sided thin tape. What it does is, एक आपके skin पे चिपक जाएगी, दूसरी आपके shirt पे जब आप press करेंगे उसके साथ चिपक जाएगी, तो the rustle of your clothes will go away. That is important. With lavalier mics, the worst that you can do is place this in a wrong way, and the rustle of the clothes is what will destroy the sound for you, because वो बाद में post-production में cut नहीं हो सकता. But what these mics give you is an opportunity, because they have a long distance recording, you can do wider shots. Let's say your subject is walking on the wall of a monument and talking, and you're at a distance. You can't have mics that are pointing in the frame, right? So you need something that in you are recording sound for yourself. The camera is at a distance. You can't have a wire dangling. पता चला खुद हिले या कोई बीच में से निकल गया, कैमरा साथ ले गया. हमने एक्सीडेंट्स होते हुए देखे हैं ऐसे. Hence you need wireless systems wherein this goes onto your mic, onto your camera, that stays on your subject, you record sound using this. Right, you get very beautiful sound because lavalier mics have a tendency, and this, by the way, have 3 levels of noise reduction presets. अगर आप एक बहुत noisy जगह पे हो, you go to level 3. अगर आप थोड़ी कम noisy जगह पे, you go to level 2, and level 1 is this. अगर ऐसा कोई setup है जहाँ पे पंखा वंखा चल रहा है, AC चल रहा है, आपको उसकी आवाज़ काटनी है, so you pick up the level 1 of preset. So these kind of automated mics are very cool. Second, these can be connected to your phones. So you have Type-C to lighting and Type-C to Type-C wires that come along, or you can buy them separately and use wireless recording, professional wireless recording for your phones also. So if you're using your phone as a vlog device, as a vlogging device, that is what you need to go for, even for GoPros. Right now what she's using on a GoPro is a DD Duo. It's brilliant for vloggers, right? वो खुद भी अगर बात कर रहे हैं तो वो भी आवाज़ आएगी, प्लस अगर सामने से कोई बात कर रहा है तो वो भी आवाज़ आएगी. बट इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, these are directional mics. तो इसके काम कैसे करता है कि जहाँ जिस डायरेक्शन में आपका आप पॉइंट करेंगे कि वो डायरेक्शन रिकॉर्ड करेगा. इट्स अ डायरेक्शनल साउंड, राइट? बट व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग प्रोफेशनल साउंड, अब अगर मैं ये करता हूँ और इनके पीछे एक मशीन चल रही है तो मशीन की आवाज़ भी इसमें कैप्चर होगी. उस डायरेक्शन से जो नॉइजेस आ रही हैं वो कैप्चर होंगी. एक हद तक कट कर पाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं. इमेजिन कीजिए आप एक कॉन्सर्ट हॉल में है, कॉन्सर्ट चल रहा है, यू ट्राइंग टू रिकॉर्ड द कॉन्सर्ट, और आपने बैकग्राउंड में स्टेज रख दिया, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या आएगा? स्पीकर्स की आवाज़ आएगी सारी की सारी. सो सबसे पहले द डायरेक्शन हैज टू बी सच वेयर देयर इज नो साउंड सोर्स, एडिशनल साउंड सोर्स कमिंग इन. तो अगर मैं यहाँ पे इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करूँ, दिस इज परफेक्ट. दिस इज अ वॉल बिहाइंड अ एंड आई कैन पॉइंट इट लाइक दिस. पहली चीज. Second cheese, if I'm pointing like this, now the diaphragm is coming from here and then her mouth. These are still disturbing me. Hence, boom mics are always pointed at an angle. They are pointed 45 degrees down, pointing towards the chest, not the mouth. और mouth क्यों नहीं? क्योंकि mouth has a wind break coming out. तो wind को avoid करने के लिए हम लोग chest पे point करते हैं mic को. जिस केस में जब ये बात कर रही है, इनकी बॉडी इज एक्टिंग एज अ साउंड एब्जॉर्बर, तो अगर पीछे से कोई साउंड आएगी भी तो वो बॉडी रोक देगी, मेरे पास कोई साउंड रिसीव नहीं होगा. सो व्हेनेवर यू यूजिंग बूम माइक्स, इफ यू हैव समबडी विद यू, गेट देम टू होल्ड इट एट अ 45 degree angle. If you're shooting in a studio, get it onto a light stand, put it up at a 45 degree angle, or get it onto a boom arm like this and get it from top. मूवीज में देखा वो बूम आर्म पकड़ के खड़े होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि जब ये डाउन पॉइंट करेगा, जमीन से कोई फालतू आवाज नहीं आ रही, until unless there are machines, you're standing on a machine. आपकी बॉडी एक बहुत लार्ज एब्जॉर्बर है, वो साउंड एब्जॉर्ब करती है. सो योर बॉडी इज नॉट एमिटिंग एक्स्ट्रा साउंड, इट्स एब्जॉर्बिंग साउंड्स फॉर यू, सो यू गेट बेटर एंड क्लियरर साउंड.
लैवलियर माइक और शॉटगन्स में या बूम माइक्स में सबसे मेजर फर्क यही होता है कि लैवलियर माइक्स आर मोर रिस्ट्रिक्टेड, वो साउंड को रियल नहीं, वो बेस ऐड करते हैं। आप लैवलियर माइक पे साउंड रिकॉर्ड करेंगे या मूवीज देखेंगे जिनमें बेस आ जाता है डायलॉग में, मतलब वो लैवलियर पे रिकॉर्ड हुई या फिर डबिंग हुई है, वो सिंक साउंड नहीं है। सिंक साउंड कब बनता है? जब मैं एक नेचुरल एनवायरनमेंट में साउंड सोर्स ले रहा हूँ, उसको एक नेचुरल डायरेक्शन से कैप्चर कर रहा हूँ, तो जो मेरे को नेचुरल एको आ रही है, जो नेचुरल रूम एम्बियंस आ रही है, जब वो सब कुछ कैप्चर होता है, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड अ सिंक साउंड। So cinema is either recorded on a sync sound or it is dubbed. Lavalier mics are used only when you're doing wider shots, but आज की डेट में because you don't have time and all of that with boom or additional crews, sound artists आपके smart हो गए, सबको lavalier ही बना देते हैं। ठीक है, जब लड़कियां अपना क्या कहते हैं ड्रेसेस वगैरह में शॉट्स दे रही होती है तो बालों में lavalier फिट किए जाते हैं मेकअप के साथ, हेयर के साथ, बाल के अंदर लिटरली पूरा एम्बेड किया जाता है और पीछे कहीं पर जाके उसको क्लिप किया जाता है, ताकि ये आपका ये है ना ओमनी डायरेक्शनल है, वो कैप्चर करता है और ब्लैक है मर्ज हो जाता है until you're shooting a blonde, right? Okay, so what I have here is a color balanced monitor. Now whenever you're shooting with external monitors, whenever we are working with external screens, there's two reasons to it. One, I get a bigger display to work with, the screen of my camera is smaller. ठीक है, if the screen of my camera is smaller, कई बारी detailed shots लेने में मेरे को problem होती है, focus out हो जाएगा या कुछ भी, you know there are problems that you face. So what I do is I add an external monitor. So this is approximately a 5.7 inch monitor, which is giving me the depth and everything to look at what I am creating. दूसरा आपने notice करा, I'm giving a feed to the TV, right? So imagine if you're at an event. Now this is damn good for people on events. आपको अपने आप को feed मिल रही है, आप किसी के टीवी में भी feed दे सकते हो, आप बड़ी screens पे feed दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, and you don't have to spread wires. This has a range of 450 feet. But now what I have an option is I have a display which is color calibrated. It is showing me the exact colors what my camera is going to shoot. If I'm shooting log profile on a 10-bit, जो हमने बात करी थी, with that I need a color calibrated monitor because my screens are not color calibrated. मैंने इसको मेरे वीडियोग्राफर के कैमरा पे सेट करूं और इसका एक सिस्टम मैं वेन्यू पे LED पे दे दूं. That's a separate, ये सिंगल सिस्टम है. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इसमें एक वाईफाई, अगर आप अपने वाईफाई ऑन करके देखेंगे तो आपको HLD करके एक वाईफाई नजर आ जाएगा. You need a software called HoloView, आप अपने फोन पे इसकी फीड ले सकते हैं. ओके, इसका कॉस्ट क्या पड़ता है? This I will have to check. This the Mars M1, कोई भी गूगल करके चेक कर लो, उससे सस्ता ही पड़ेगा. मैं अभी एक लाइव वीडियो के लिए कैमरा लेने वाली हूँ इसी हफ्ते, तो बेटर है मैं इसी पे जाऊँगी. अगर लाइव वीडियो में कैमरा क्यों खरीद रहे हो अलग से? Yes, Mars M1 Hollywood is 45,300. हाँ. On ग्रेट. ये है ना? 47,900. Very decent. I wouldn't say an entry level camera, it's much more than an entry level camera. 120 fps आपको slow mo मिल जाता है HD में and all of that, plus shoots 4K. This is micro four thirds. The lenses are dirt cheap. अभी मैंने कोई comparison दिखाई दिया था 50 mm on a full frame versus a 50 mm on a micro four third. इसका क्या बॉडी कितने का है? ये इसका एक किट लेंस आता है, उसके में 90,000 का है. I would prefer anybody getting into professional cameras to go for a G9, but if you're saying नहीं मेरे को under 1 lakh रहना है and you still want to start somewhere, this is good. Shoots 4K. I have used it for a lot of my travel films. I always tend to shoot 4K. Since 2017 we've just been shooting 4K. We've never shot HD. इस तरीके के वर्कशॉप्स मुझे जब भी मौका मिल जाए मैं कभी नहीं मिस करती, और अब मैं इस वीडियो के थ्रू आपको भी दिखाती रहूँगी. और आई एम श्योर आज का वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. आई एम श्योर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो के थ्रू. और करती हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप. अब मैं घर आ गई हूँ, वीर को देखती हूँ क्या कर रहा है वो, और मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.